So today in this video, I'm going to do the revision. All of you, please take out your English grammar copy and write the revision. This is English revision for PT6. Okay, write the heading days and please put classwork and today's date. आज का classwork का date भी लिख लो. Okay, I can see many students still absent. Arpit is there, Abhigyan is there, Ankush is there, Vidya is there, Ayushi is there, Isha is there, Ravi Ranjan is there, Yuvraj is there. What about Nitish? What about Prince? What about Monal? What about Muskan? I have to take their class also. Wait. Now English revision for PT6. All of you very well know that MCQ will come, right? Only MCQ, multiple choice question ही आएगा. 20 क्वेश्चन 20 मार्क का. Is that clear? 20 क्वेश्चन 20 मार्क का आएगा. MCQ will come just like PT5. PT5 की तरह आएगा. Okay. Now जो भी मैं लिख रहा हूँ, it is not necessary कि जो मैं लिख रहा हूँ वही आएगा, बस इसी टाइप का आएगा. Okay. So write down in your copy please. English revision for PT6 and put today's date. Right, number 1. Which is the correct synonym for the word which is the correct synonym for the word to fire? यानी कि to fire के लिए correct synonym कौन है? A, ammunition. Number B, ignition. Number C, remission. और number D, evolution. Copy this. Ayushi Singh, both is not clear. All of you can clearly see the video. Abhigyan is saying yes. Vidya is also saying yes. Anyway, I am going to read out for you. Ankush is saying no, but Ravi is saying yes. Yuvraj saying no. जो नो बोल रहा है प्लीज अपना मोबाइल का सेटिंग जरा देख लो. मे बी सम प्रॉब्लम इज देयर बिकॉज मैंने बोथ को एकदम कैमरा के करीब रखा है. एनीवे आई एम रीडिंग आउट द क्वेश्चन फॉर यू. विच इज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड टू फायर? A, emission. B, ignition. C, remission. And D, evolution.
The correct answer is ignition. आंसर लिख लो. The correct answer is ignition. ओके, देखो ऐसा ही फॉर्मेट आएगा टेस्ट में. PT6 में ऐसा ही आएगा क्वेश्चन, इसी टाइप का. ओके, सी इग्नाइशन इज द करेक्ट आंसर. डन, हो गया. विद्या डन. जिसका भी हो गया डन लिख दो चैट में. whoever has finished please write done. Done. Isha also done. Ravi Ranjan also done. Ayushi not done. Abhigyan also done. Done. Okay. Now I'm erasing. Now question 2. Which is the correct antonym for old? Which is the correct antonym for old? Old का सही antonym, you know antonym mean opposite. A, tired. Ancient. Oldest. Which is the correct antonym for old? Tired. Yes, Yuvraj is correct. Ancient, new, the oldest. Yuvraj has written the answer. It is new. Okay. The correct answer is, Ankush has also written new. Okay. Now number 3. Here the option is A. Boy होगा. BOY boy. C. Both. Nadi. None. See the question.
द बॉय या द बॉय, द बॉय और द डैश was very massive and huge. ओके, तो क्या होगा ऑप्शन ए बॉय, न बी बॉय, न सी बोथ, न डी नन। क्या होगा? याद रहे ये बॉय मतलब लड़का, और ये बॉय जो सागर में बड़े बड़े शिप को बांध कर, खूंटी से लगाकर, चेन से लगाकर, एक तो बड़ा सा लोहे के साथ नहीं रखा जाता है, एक बड़ा सा लोहा रख दिया जाता है, वेरी ह्यूज मैसिव लोहा, जो पानी में भसता हुआ रहता है, उसी से चेन लगा हुआ रहता है शिप में, ताकि वो शिप पानी के साथ भस के आगे ना जाए, उसे कहते हैं, वो बिग मैस को कहते हैं, वो लोहा का एक चट्टान को बॉय, BOY। और ये बॉय मतलब लड़का, तो क्या होगा इनमें? द ये बॉय, ये BOY बॉय वॉज वेरी मैसिव एंड ह्यूज, या द BUOY बॉय वॉज वेरी मैसिव एंड ह्यूज? ना दोनों ही होगा, बोथ, ना डी नन। A B C ना डी। चैट में लिखो, युवराज ने बी लिखा है। एंड इफ एनीबडी हैज अदर आंसर प्लीज चैट में रिप्लाई दो। अंकुश ने भी बी लिखा है। देन एनी अदर? आयुषी राज ने भी बी लिखा है, एंड अभिज्ञान ने भी बी लिखा है। ये वीडियो will not able to see the both clearly। अब वीडियो को बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा। अभिज्ञान, इज इट क्लियर नाउ? एनीवे, you see, the correct answer is यही, yes, B boy, यही boy होगा। okay, the correct answer is this is the boy। I hope all of you have written। now I'm erasing 2 and 3। okay, now come to question number 4। okay, now come to question 4। mother was dashed by hearing the disease of the father। in this you have to use, you have to utilize the proper so disease, mother was there by hearing the disease of the father, which is the correct word, which is the correct phrasal verb among the following? A, put away, B, broke apart, C,
look into, and D, boiled on. So mother was dashed by hearing the disease of the father. Which is the correct option? A, put away. B, broke apart. C, look into. D, boiled on. Which is the correct option? Any guess? Abhigyan is saying B, broke apart. Then any other answer? Ankush is saying put away. Put away. Anyone else? Anyone else? Ayushi is saying A, put away. Isa is saying, sir, what is 3 and 4 option? 3 is look into and D is boiled on. C is look into and D is boiled on. B-O-I-L-E-D. Boiled on. Yuvraj is saying 3 number, yani ki look into. Actually, the correct answer is B, broke apart. Abhigyan was correct and Yuvraj was also correct. Vidyavani is also correct. B, broke apart. मतलब जब हम लोग कोई दुख, कोई न्यूज सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं ना, हम लोग अंदर से टूट जाते हैं. जब हम लोग अंदर से टूट जाते हैं बहुत दुखी होकर, उसे कहते हैं ब्रोक अपार्ट. तो मदर वाज डैश्ड बाय हियरिंग द डिजीज ऑफ द फादर. तो मम्मी भी अंदर से टूट गई थी जब उसने फादर की बीमारी के बारे में जाना. ओके, so that is why broke apart. This phrase is correct. This phrasal verb is correct. Broke apart. Done. Now I am erasing. Okay. Should I erase? Done. Number 4. देख लो इसी तरह का आएगा. PT6 में जो क्वेश्चन आएगा इसी तरह का आएगा. MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आएंगे. ओके. Now number 5. Number 5. Rahul told me to dash the car. Okay. Now the options are A, B, C, D. A is B is go through. C is get into. And D is Rahul told me to dash the car. Which phrasal verb is correct इनमें से? Put into the car, go through the car, get into the car, ना pass on the car. क्या होगा? Which phrasal verb is correct among this following? Any guess? Pass on your answers in the chat. Which MCQ is correct? I hope this is visible to everyone. सबको दिख रहा है बोर्ड?
मैंने ऊपर लिखा है ताकि सबको दिखे। आई एम रीडिंग आउट अगेन। नंबर 5, राहुल टोल्ड मी टू डैश द कार। ए, पुट इनटू। Rahul told me to put into the car. Put into. या B, go through. Rahul told me to go through the car. ना C, get into. Rahul told me to get into the car. रवि रंजन ने पास ऑन लिखा है। Rahul told me to dash the car. D, pass on. Rahul told me to pass on the car. अब बोलो क्या होगा? C लिखा विज्ञान में, यानी कि get into. Any other guess? Say, repeat, you want to say the answer? Vidya ने लिखा है C, get into. Why Arpit is not answering anything? Anyway, C, ईशा ने भी C लिखा है। Yes, the correct answer is C. Very good Vidya, very good Abhigyan, very good ईशा। It's C. Get into का मतलब होता है अंदर बैठो। Get into होता है ना, कोई गाड़ी जल्दी से लाता तुम्हारे सामने, गेट खोलता है और क्या बोलता है, जल्दी ढुको अंदर, तो उसे कहते हैं get into. राहुल told me to get into the car. मतलब राहुल ने मुझे बोला जल्दी अंदर बैठो कार के अंदर। ओके, तो दिस फ्रेजल वर्ब सी, get into, is correct. आई होप तुम लोगों ने ये 5 MCQ कॉपी में लिखा, all of you. Okay, now I have to end my class. More revision I will do tomorrow. कल भी हम बाकी का रिवीजन करेंगे। ओके, मैंने इस 5 MCQ में तुम लोगों को सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स और फ्रेजल वर्ब कराया। ओके, tomorrow I will do again the same revision. And I have noted who have not attended this English class today. Till now, only Ankush, Abhigyan, Ayushi Raj, Vidya, Isha, Ravi Janjan, and Yuvraj is with me. Okay, and Isha. That's all. Monal is not there, Muskan is not there, Nitish is not there, Ankit is not there. Anyway, I'm ending the class. Bye.